faculties in colleges. By this, I want to just make you understand that this is not the only campus, this is a multi-campus university. We have introduced a Tulip Center in our university also. We are first in patents and we have more than 100 patents. This is about our research under the leadership of our Vice Chancellor and Director of Research. Our scientists stand in 2% top scientists cited by Stanford, and our index, H index is touching 100. I must say, sir, that in throughout India, 52 schools have been granted from ICR, and we are one of them. So, training was designed to enhance knowledge, practical. Program we are going to have 51 lectures, 6 practicals, and we have kept one exposure visit and sightseeing to the Dal Lake and other things. Say that in this lecture we are going to have lecture of Professor Ratan Lal from State Ohio University, Professor Bhagirat Chauhan, who is from Queensland University, Professor R.M. Kathy Dessen, who has worked very hard in this regenerative agriculture. Good morning, sir. Myself, Dr. Mandev Bhaskar, working as a junior economist in ASCP and IFS. One is that many of the teachers from this university and many of the scientists who have come from other parts of the country, it is a requirement for them to have a 21 days training program for their career progression. So let me compliment the directorate and Mr. Dr. Parmeet, who has created this opportunity for all of you. But let's see the structure of this whole program. The theme and the speakers which he has roped in, Dr. Parmeet has roped in by his personal PR. And the eminent scientists and the scholars around the world would be speaking on this very important theme. So again, compliments to you. But let me tell to you that there should be two very important outcomes of this program. One is that these trainees will be graduating from this university after 21 days. You will be going back as graduates of this university. We would consider you as our alumni and you would take some good memories with you. That's one outcome of it. But the other outcome of it has to be that we are starting a program, a master's. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात पे फोकस कर रही है कि हमने इसको कैसे रिवर्ट करना है. नेचुरल फार्मिंग और रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर पे कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं. हम अपनी यूनिवर्सिटी में एक मास्टर्स प्रोग्राम भी शुरू करने जा रहे हैं इस नेचुरल फार्मिंग और रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर पे. लेकिन उसकी शुरुआत से पहले हमने इस 21 दिन के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया. इसमें कई सारे एक्सपर्ट्स हमें कंट्री से और कंट्री से बाहर पार्टिसिपेट करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होगा और हमें जम्मू कश्मीर को भी उस ड्राई लैंड एग्रीकल्चर और रेजिलेंट एग्रीकल्चर की तरफ ले जाना होगा. तो आने वाले दिनों में अगर हमने एग्रीकल्चर को आगे ले जाना है और यहाँ की मईशत में इसका इजाफा करवाना होगा तो बहुत ज़रूरी है कि हमें इसको कमर्शियल और सेकेंडरी एग्रीकल्चर के साथ साथ में इसको सस्टेनेबल बनाना होगा. और उसके लिए हमें नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन, प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन, इस सब का सहारा लेना होगा. Government of Jammu and Kashmir has instituted an award. It's called as Incubator of the Year. So this is the first time they have instituted this award, and that award has gone to SCOAS Kashmir, the Incubator of the Year. And there are some very good reasons for us to earn that award. We have developed the facility so that we can produce those organic inputs, be it those organic pesticides, organic fertilizers, all those things. You see the facility, and we are upskilling those facilities. And at the same time, we have a very strong startup culture in this university. And many organizing secretary and organizers, they will be part of that, the students, and they will be recording all those lectures and all those good messages that are there in those lectures. हम पे इल्जाम डाल रहे हैं भाई कैंसर हो गए इनकी वजह से. ये 21 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है. दिस इज़ द विंटर स्कूल. ये और रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर, जिसको आम लोग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी कहते हैं, नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं, ये सारे इसमें कवर किए जाएंगे. इसमें बाहर से आउट ऑफ कंट्री और विद इन कंट्री जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर पे जानी मानी हस्तियां हैं वो इसमें लेक्चर देंगे. बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जाएंगे किस क्रॉप पे, और ताकि ये जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र की वजह से जो रेजिड्यूज़ वहाँ रहे हैं जिससे हमारे ह्यूमन हेल्थ पे भी रिपोर्ट्स आए हैं कि असर हो रहा है,
وہ ہم اس چیز کا خیال رکھ کے ہم آگے اب نیچرل فارمنگ پہ بہت زور دے رہا ہے، پورا انڈیا دے رہا ہے. ہمارے جو پردھان منتری ہے شری مودی جی، وہ ہر بار اس پہ فوکس کر رہے ہیں. بلکہ ICAR ایک بہت بڑا انیشیٹو لے رہا ہے کہ وہ ایک پروگرام ماسٹرز ڈگری کے لیے نیچرل فارمنگ پہ کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں ہم پورا ماڈلز جو ہے یہاں پہ جتنے بھی پورے دیش سے سائنٹسٹ آئے ہیں ان کو دکھائیں گے کہ کس طرح کے ماڈلز ہونے چاہیے تاکہ وہ آگے فارمرز کو انآرگینک ایگریکلچر جہاں پہ پیسٹیسائڈز فرٹیلائزر یوز کیا ان کو ریپلیس کن چیزوں سے کیا جائے تاکہ فصل بھی جو ہے اس کا ییلڈ بھی اتنا رہے اور یہ صحت کے لیے اچھا رہے. ایگریکلچر کو عام ایگریکلچر فار ہیلتھ کے لیے آگے ہم اس کو مارکیٹ کر سکیں.